صلاة الله سلام الله على طه رسول الله. صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله. صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله. توسلنا ببسم الله وبالهادي رسول الله وكل مجاهد لله بأهل البدر يا الله. وكل مجاهد لله بأهل البدر يا الله. صلاة الله سلام الله على طه. Assalamu alaikum. How many of you are comfortable with English? If I speak in English, how many of you will understand clearly? Raise up your hands. अच्छा, कितने ऐसे लोग हैं यहाँ बैठे हुए जो उर्दू ठीक से समझते हैं? अगर मैं उर्दू में बात करूँ तो आप समझ जाएंगे? माशाल्लाह, very good. So that gives me a good opportunity. Why I asked you such a simple question was because I had one guru of management when I was a student in IIT, and he told me something which has stuck in my mind. 30-35 साल हो गए. उन्होंने कहा कि if you want to teach रामू मैथमेटिक्स, it is not enough to know mathematics. तो हम परेशान हो गए कि साहब मैथमेटिक्स पढ़ाना है तो it is not enough to know mathematics, क्या you should know biology, is it? क्या पूछ रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि नहीं, if you want to teach रामू mathematics, it is not enough to know mathematics, you should also know Ramu. Unless you understand the person to whom you are interacting with and teaching, what is the point in, you may be an expert in mathematics or whatever subject you are teaching, but are you reaching out to the person? ये सवाल उठता है ना. तो हुआ ये है कि पिछले चंद सालों में दुनिया भर में जो तालीम का जो पैराडाइम जिसको कहते हैं कि स्ट्रक्चर जो है वो काफ़ी हद तक बदल गया है. We used to have for more than 200 years what was called as the teacher-centric approach. यानी टीचर को इम्पोर्टेंस दी जाती थी. टीचर कितना अच्छा आलिम है, कितना अच्छा पढ़ा सकता है, क्या क्या जानता है, तो उस तरीके से he will be able to convey to the people. Now what has happened in the last few years, the whole paradigm has shifted to what we call as student-centric approach. यानी the center जो है, the point of focus is the student and not the teacher. क्यों? जब पहले ये सिस्टम बराबर चल रहा था तो what is wrong with it now? The difference is कि आज से 20 साल या 50 साल पहले the student, तालिब इल्म को कोई दूसरा जरिया नहीं था तालीम हासिल करने का except the teacher. तो टीचर जो है, जो अपना उसका जो इल्म होता था वो कन्वे करता था. आज in the information technology era and in the internet era, any information is available at the touch of a button. Any student, 10 साल का हो, 20 साल का हो, whatever it is, all you need to do is to go on to the internet and you will get whatever information you want. So the role of the teacher, the role of the motivator, the role of the facilitator is no longer to give information. तो पहली चीज आप ये अपने ज़हन में रख लें कि your importance is not based on what you know, how much information you have, how much text you can convey to the people. It is how well you can relate and how well you can motivate. इसलिए मुझे बड़ी खुशी हुई कि the title suggested today was Ignite the Child Like a Rocket. आप जानते हैं ये मुहावरा कहाँ से आया? बताइए. Ignite the children like a rocket. किसने कहा ये? Nobody knows? हाँ. Dr. Abdul Kalam, being a rocket man and a person who loves children and loves the development of youth,
he spoke in the rocket language a very simple thing. Okay, ignite the mind of the child so that he becomes a rocket and he flies by himself. Don't tie a rope and start pulling him up. You will not succeed. अगर आप रियल लाइफ में नहीं, कम से कम टीवी में अगर आप देख रहे हैं कि एक रॉकेट का लॉन्च हो रहा है, तो यू विल नोटिस दैट द रॉकेट फर्स्ट स्टार्ट्स फायरिंग इट्स फ्लेम, और धीरे से रॉकेट उठना शुरू होता है. एज द फ्लेम्स टचेस द ग्राउंड, द रॉकेट स्टार्ट्स गोइंग अप. एट व्हाट स्पीड? इट इज गोइंग एट द स्पीड ऑफ ए बाइसिकल. आपके नज़र के सामने है रॉकेट और इतना धीरे से ऊपर जा रहा है, आप कहेंगे कि ये चांद तक पहुंचते पहुंचते तो 50 साल लग जाएंगे इसको. एट द स्पीड एट विच इट इज स्टार्ट. बट व्हाट हैज हैपेंड इज दैट द इंजन्स ऑफ द रॉकेट हैव बीन ignited. After that nobody needs to control. Most of the rockets, as you know, are not even manned. इसके अंदर कोई बैठता भी नहीं है एस्ट्रोनॉट. They are not manned. And you cannot control a rocket once it goes into space. But if the ignition is correct, the rocket starts picking up speed. As it goes higher and higher, it keeps developing more and more speed, and eventually it reaches wherever it has to reach its goal. अगर उसका ignition गलत हो, if there is a mistake in the way it has been fired, so it will come and fall. That also you have seen. There have been so many cases where rocket missions have failed. Forget about reaching the moon or the Mars. They have not even gone 1 kilometer up and they have collapsed. So this is what is the theme on which I am going to talk today. You have concern. I am very happy that so many of you have taken a genuine interest in helping your younger brothers to come up in life. And let me tell you, the path that you have chosen is something very, very good. Not only from an altruistic angle, not only for the benefit of the young boys, but also for your own self. Because, brother, I'm very happy that he was touching upon a topic which is very dear to my heart, and that is the multiple ways in which learning takes place. I'll go into that a little later. Okay, as he was just telling you as I came in, there are some people who are kinesthetic, there are some people who are visual, there are some people who are auditory. Everybody is different and he is unique. So what happens is that if you know the method of igniting that particular child, your job is half done. And at the same time, if you start understanding these concepts and spend whatever time you are spending, even once in a week or once in a month, to help the younger boys, indirectly you are helping yourself, because along with all the other methods of learning, जैसे auditory है या kinesthetic है या visual है, उसके साथ साथ there is another very interesting concept of learning. You really learn well when you teach somebody else. जब किसी और को सिखाना होता है ना, तो then you learn very well. अगर आपको कहा जाए कि how will you reach Darussalam, directions, you may get a little confused. एक बार दो बार हाँ मैं आया था कई साल पहले, I am not very sure, near the cantonment station, you will get confused. But supposing you have to explain to somebody else, somebody from your town is coming to Bangalore and he has to reach here, और आप उसको समझा रहे हैं, you know that you won't be there when he reaches Bangalore. So when you are going to explain to him कि कैसे दारुसलाम पहुंचना चाहिए, you will realize that you will do your homework better, you will learn better, and as you explain and as he asks questions, when you say कि cantonment station से सीधे जाके right turn लो, and he will ask you पहला right turn लो या दूसरा right turn लो, now you have to think नहीं नहीं पहला right turn लो, सीधा सामने जाओ, right को building दिखेगी, in between there is no junction, then you remember नहीं नहीं बीच में एक traffic light है, उसको पार करके आगे जाओ, then you will see the building on the right. So this is what I want to congratulate you कि आप लोगों ने जो रास्ता चुना है कि you want to help others, you want to help your younger brothers, you are also doing a service to yourself because your own learning in many ways is going to improve. Coming to the main point, as I told you, the whole concept of learning has taken a very, very different phase in the last, particularly in the last 30 years. Though काफ़ी landmarks रहे हैं in this field of human behavior. The first is what we call as the understanding of multiple intelligence.
पहले क्या होता था कि तकरीबन 100 साल तक लोग ये समझते थे कि इंटेलिजेंस इज वन सिंगल पैरामीटर, कॉग्निटिव इंटेलिजेंस जिसको कहते हैं या बुद्धि जिसको कहते हैं. तो पीपल यूज्ड टू थिंक दैट देयर आर वेरी इंटेलिजेंट पीपल, देयर आर एवरेज इंटेलिजेंट पीपल एंड देयर आर बिलो इंटेलिजेंट पीपल. हुआ क्या कि आफ्टर सम टाइम दे स्टार्टेड रियलाइजिंग कि एक शख्स जो स्कूल में और कॉलेज में उसका परफॉर्मेंस बहुत लो रहा, वो आगे चल के आर्टिस्ट बन गया, या आगे चल के कोई पॉलिटिशियन बन गया, या आगे चल के लॉयर बन गया, या बन गया, जिस फील्ड में उसने इतनी हुनर पाई और इतनी कामयाबी पाई कि लोग दंग हो गए. So that is when people started realizing. The first path-breaking work on this was done in the early 1980s by a psychologist called Howard Gardner. वो अभी भी हैं, बैंगलोर भी आके गए last year. He is with Harvard University. You can Google Howard Gardner. You'll get a lot of information on him. Howard Gardner was perhaps the first person to bring to the common man the concept of what we call as multiple intelligences. So it is not just the mathological or the literary intelligence which was being given focus all the time. क्या आप पढ़ना लिखना सीखो, स्पेलिंग सही सीख जाओ, सेंटेंस फॉर्मेशन सीख जाओ तो आपके लैंग्वेज ठीक हो गई. उसी तरीके से आप मैथमेटिक्स सीख जाओ, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, अलजेब्रा, ज्योमेट्री सीख जाओ, you are on your way to success. But that is no longer true. He started off with 7 of these intelligences. We have added much more in the last 30 years. Just to give an example was what Brother Amjad was telling you about kinesthetic intelligence. एक शख्स जिसका हाथ जो है इतना बेहतरीन काम करता है कि when the mind gives the instruction, his hand moves to the minutest thing. The most common thing where you see kinesthetic ability is what is going on right now. Everybody is watching TV for that. What is that? IPL. क्रिकेट में बॉलर जो है अगर वो सही तरीके से ट्विस्ट करा, उसके फिंगर्स जो हैं अगर सही बॉल को थ्रो कर सकते हैं, he can make the batsman out. The reverse of that, if the batsman can hold his bat at exactly the correct angle with the correct movement, it can become a sixer. If he is slightly deficient in that, it can go for a catch. I'm giving you this because it is something which everybody understands, but it is not restricted to sports and cricket or something of that sort. One of the highest paid and most respected professions anywhere in the world is that of a surgeon. पहले आप डॉक्टर बनते हैं, उसके बाद आला तालीम हासिल करके आप सर्जन बनते हैं. We have cardiothoracic surgeons, we have neurological surgeons, we have so many surgeons. There are surgeons who charge in lakhs of rupees just for one surgery. क्या फर्क है उनमें और दूसरे डॉक्टरों में? He has the kinesthetic skill. जब उनका हाथ सही तरीके से चलता है तो it makes a difference between life and death. Any other surgeon is trying to cut a vein and stitch it to something else. He makes one mistake and the patient can die. मेरा एक क्लासमेट था बचपन से, उसके दोनों हाथ उतने ही बेहतरीन तरीके से काम करते थे. We write with our right hand. He could write with his left hand as well as right hand. We do so many things with our right hand. Whatever we can do with right hand, he could do with left hand also. तो बचपन में एक्चुअली उसका मजाक उड़ाया जाता था. एंड ही वाज लाइक ए शो पीस. उसको बोलते थे, दोनों हाथों में 2 पेन देते थे, बोलते थे लिखो दोनों हाथ से, एंड ही यूज्ड टू राइट. हमारे लिए तो जरिया एंटरटेनमेंट था, लेकिन एक टीचर हमारे थे जिन्होंने ये नोटिस करके उसको बोला कि बेटा तू डॉक्टर बन और तू सर्जन बन. बहुत कम ऐसे सर्जन हैं जो दोनों हाथ से काम कर सकते हैं. एंड ही डिड इट. ही इज नाउ ए जनरल सर्जन in Bombay, and he is called at the time of surgeries where you have to reach one part of the inside of the body where with one hand you cannot reach. समझिए, you are doing a cardiothoracic heart surgery और हार्ट के पीछे एक ऐसा वेन है जिसको कुछ प्रोसीजर करना है, आप एक हाथ से नहीं कर सकते. तो he is called for such surgeries where he puts both his hands inside and he ties that vein and gives it.
There are times when he is called for 5 minutes into the operating theatre to do only that part of the procedure which has to be done by 2 hands. And his minimum fees is 50,000 rupees just to come up to the operating theatre and go. क्यों मैं आपको ये मिसाल दे रहा हूँ? To show you that when you deal with a child, please understand that he may be having any form of intelligence which may make him successful. अब आपको मैं एक दो बेहतरीन मिसालें देना चाहता हूँ. हमारे स्कूल के ज़माने में वी स्टडीड इन ए क्रिश्चियन स्कूल, तो जो फादर्स और जो टीचर्स थे उनका एक ही रुझान था कि बच्चे जो हैं वो आला तालीम हासिल करें, एकेडमिक्स, नथिंग एल्स. स्पोर्ट्स ये वो सब सेकेंडरी है. एवरीबडी हैज़ टू परफॉर्म वेल इन एकेडमिक्स. दैट इज़ दी प्रेस्टीज ऑफ दी स्कूल. तो होता क्या था कि हर टर्म के बाद एक टर्म एग्जामिनेशन होता था और उसमें मार्क्स दिए जाते थे, रिपोर्ट कार्ड दी जाती थी, और रिपोर्ट कार्ड में एक एक सब्जेक्ट के मार्क्स होते थे. लास्ट में टोटल परसेंटेज और आखिरी कॉलम में होता था रैंक. तो आउट ऑफ 38 चिल्ड्रन एवरीबडी यूज टू गेट रैंक्ड फ्रॉम 1 to 38. तो जैसे रिपोर्ट कार्ड दी गई, इंसानी फितरत है. एक बड़े बेहतरीन साइकोलॉजिस्ट से मैं ये मुहावरा सीखा. मैं, और वो साइकोलॉजिस्ट कौन है? ट्रक ड्राइवर हैं. एक ट्रक के पीछे जा रहा था मैं हाईवे पे, और देखा हिंदी में, हरियाणा की ट्रक थी, उसमें हिंदी में पीछे लिखा हुआ है कि इंसान को अपने दुख से उतना दुख नहीं होता जितना दूसरे के सुख से होता है. कितना बजा फरमाया. आपको चाहे कुछ भी दुख हो आप बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन उसको क्यों सुख हो रहा है? आप फेल हो गए कोई बात नहीं, लेकिन वो क्यों पास हुआ? तो यही होता था कि सब ये देखते थे कि मुझे क्या रैंक मिला और मेरे दोस्त को क्या रैंक मिला. सब कंपैरिजन होता था, मार्क्स वार्क्स ये वो. पिछले टर्म में मुझे 60% मिला था, इस टर्म में मुझे 70% मिला. मुझे खुश होना चाहिए ना? नहीं. लेकिन अगर मेरा रैंक कम हो गया तो मुझे अच्छा नहीं लगता. और ख़ास करके वो जो पढ़ाई बिल्कुल नहीं करता, हमेशा खेलकूद में रहता, उसको मेरे से अच्छा रैंक मिला. ये क्या इंसाफ हुआ? तो इस तरीके से होता था. 38 बच्चे उसमें 2 लड़के ऐसे थे who used to always compete for the 38th rank. In one term, one would get 37, one would get 38. In the other term, this fellow would get 38 and that fellow would get 37. The 36th ranking person was so much higher that there was no competition to them. हुआ क्या? एक बार फेल हुए, 2 बार फेल हुए, they were thrown out of the school. Declared as non-matriculates, illiterate, not fit for education. अच्छे लड़के थे, तो I kept in touch with them. एक जाकर टैक्सी ड्राइवर बन गए. दूसरे सब जो क्लासमेट्स थे बोले देखे यही होता, पढ़ाई लिखाई नहीं की है तो ऐसे काम करना पड़ता है. दूसरे को बातचीत अच्छी आती थी, अंग्रेजी उसकी अच्छी थी, तो वो बन गए मेडिकल सेल्स रिप्रेजेंटेटिव. टाई पहन के बैग लेके दुकान जाते हैं, दवाइयाँ बेचते हैं. बोले देखो यही होता है अगर अच्छी पढ़ाई आला तालीम नहीं की है तो. बाकी सबका क्या हुआ? आला तालीम